Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 3, Conservation of Natural Resources, and today is its 5th lecture. So my dear students, let's quickly start our topic. आपको पता है कि हमने लास्ट चैप्टर में endangered animals के बारे में पढ़ा था. बहुत से endangered animals जो पाकिस्तान में हैं, like मारखोर, mountain weasel, Asian black bear, ब्रांडेड ईगल रे, बलोचिस्तान फॉरेस्ट डॉरमाउस, इंडस रिवर डॉल्फिन, ये तमाम जानवर जो हैं ये इंडेंजर्ड है. दे आर नियर टू एक्सटिंक्शन. इनका काउंट बहुत कम रह गया है जिसकी वजह से इनकी जिंदगी को खतरा है. फिर हमने वो वेज भी सजेस्ट किए थे जिससे हमें पता चलता है, जिससे हमने ये बताया कि कैसे हम इनकी जिंदगी को बचा सकते हैं. So my dear students, do you have any idea what are extinct animals? जब आप एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में सोचते हैं तो आपके ज़हन में सबसे पहले क्या आता है? कौन सा जानवर आता है? An animal becomes extinct when the last existing member dies. यानी कि जब पूरी जमीन पर वो जानवर जो है खत्म हो जाते हैं और आपको नजर नहीं आते, such animals are called extinct animals. So आपको किसी एक्सटिंक्ट जानवर के बारे में पता है? डायनासोर्स. ऑफ कोर्स जब भी हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे ज़हन में सबसे पहले डायनासोर्स आते हैं. सो करेक्ट आंसर, डायनासोर्स जो है दे हैव एक्सटिंक्ट नाउ. अब इनकी जो स्पीशी है या आपको कोई डायनासोर्स जो है वो आपको ज़मीन पे नजर नहीं आते. वी कैन ओनली रिकग्नाइज देम और सी देम इन द पिक्चर्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ डायनासोर्स ही एक्सटिंक्ट नहीं हुए, बहुत से और जानवर हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लाइक डोडो बर्ड, टेस्मेनियन वुल्फ and mammoth. Mammoth is just like an elephant और ये आइस एज में होता था बहुत पहले, और हमें इसके स्केलेटन्स मिले हैं. रूइंस में से हमें जो है इनकी हड्डियां वगैरह मिली हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि such animals once lived on earth. ठीक है? Just like dinosaur, these animals have also become extinct now. So my dear students, जो dinosaurs हैं बड़े स्ट्रेंज एनिमल्स हुआ करते थे. सम ऑफ देम वर वेजिटेरियन, यानी कि वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते थे, जस्ट लाइक दीज टू डायनासोर्स. दिस इज अ बोरेंटोसॉरस बाय द वे. मुझे भी कुछ डायनासोर्स के नेम्स पता है. इट वाज अ ह्यूज लिजर्ड. बहुत बड़ा ये डायनासोर होता है, इसकी बहुत बड़ी गर्दन होती थी, एंड इट यूज्ड टू फीड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज. एंड देन these two dinosaurs are meat eating dinosaurs. ये कार्निवोर्स हैं, और इनमें से जो ये डायनासोर है, दिस इज अ टी-रेक्स, टायरानोसोरस रेक्स है ये, और इनका स्कल जो था बहुत ह्यूज होता था, बहुत पावरफुल, और बड़ी इसकी टेल होती थी जिससे ये अपने एनिमीज को आराम से गिरा देता था या मार देता था. एंड इट यूज्ड टू फीड ऑन अदर एनिमल्स मीट. So my dear students, this is about dinosaurs. They have become extinct now. Now let's quickly look at the student learning outcome given on page number 27. So by the end of today's lecture, all the students will be able to identify animals which are extinct like dinosaur. So my dear students, let's quickly look at the Islamic perspective. There is not an animal that lives on the earth, nor a being that flies on its wings, but they form communities like you. Nothing have we omitted from the book, and they all shall be gathered to their Lord in the end. So my dear students, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि ज़मीन में चलने वाले किसी जानवर और हवा में परों से उड़ने वाले किसी परिंदे को देख लो, ये सब तुम्हारी ही तरह की अनवा है, और हमने इनकी तकदीर के नविश्ते में कोई कसर नहीं छोड़ी. फिर ये सब अपने रब की तरफ समेटे जाते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी जानवर हैं, जिस तरह इंसानों ने अपने रब की तरफ जाना है, इसी तरह तमाम जानवर भी जो हैं दे विल डाई, एंड यानी कि हमने अल्टीमेटली अल्लाह ताला के पास ही जाना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ एनिमल्स गो एक्सटिंक्ट. हमने इंडेंजर्ड एनिमल्स पढ़े थे, तो आपको पता होना चाहिए कि जानवर जो है वो एक्सटिंक्ट कैसे होते हैं, वो जमीन पे से खत्म कैसे हो जाते हैं. When their count becomes really less, their natural habitat is destroyed due to pollution, due to illegal killing, due to some disaster. Natural disaster भी बाज़ दफ़ा hit करता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो species है they become extinct. So इस वजह से जो है जानवर खत्म हो जाते हैं ज़मीन पर से. So my dear students, quickly open page number 33 in your books.
I hope everybody has opened page number 33 in their books. So my dear students, here in this picture you can see a lot of different types of dinosaurs जो कि अब extinct हो चुके हैं. Let's quickly read about these. Extinct animals. An animal becomes extinct when the last existing member dies. यानी कि जब आखिरी जानवर भी उस स्पीशी का मर जाता है, that means they are extinct now. अब वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे. The dinosaur was a very strange animal. They are not present in the world now. They were present on Earth millions of years ago. There were different sizes of dinosaurs. Some were as small as a chicken, while some were as big as 100 feet long. They are now extinct from the world. So my dear students, dinosaurs जो है वो अब extinct हो चुके हैं, लेकिन ये बड़े strange animals होते हैं. Some were as small as a chicken and some were as tall as 100 feet long. यानी कि इतने बड़े भी होते थे. और some were, मैंने आपको जैसे कि पहले कुछ facts बताए थे कि some were vegetarian, यानी कि कुछ plant eating dinosaurs थे और कुछ meat eating dinosaurs थे. So this is about extinct animals. Now we will move forward towards the practice. For this, you can simply download worksheet number 5 from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Now let's have a look. सबसे पहले आपको differentiate between endangered and extinct animals. कॉलम दिया हुआ है आपको extinct and endangered. आपको दोनों के दरमियान में differentiate करना है. Very easy. Endangered animals are those whose count is very less and they are near to extinct. And extinct animals are those whose last member has died and they are no more on the face of earth. So the next is read each scenario, decide if the organism is endangered or extinct. Write your answer. In the box beside the scenario, explain why you chose your answer. Choose your answer. So my dear students, आपको 2 scenarios जो है यहाँ दिए हैं, इनको carefully आपको read करना है और फिर आपको अपना आंसर सामने लिखना है. Let me read it out for you. The first scenario says the dodo bird used to live on an island, but the sailors landed on the island in the 1700s. They killed many for food. Over time, there were fewer and fewer birds. What finally happened to the dodo birds? So dodo bird जो है 1700s के era में कुछ sailors जो है वो उस island पे जहाँ dodo birds रहते थे वहाँ land किया उन्होंने और because they were hungry and they needed food तो उन्होंने बहुत से birds जो है उनको मारा, illegal hunting की उनकी और उसकी वजह से dodo birds जो है उनके साथ क्या हुआ, birds जो है वहाँ तादाद उनकी कम होती गई. Finally, what happened to dodo bird? Are they endangered or extinct? They become endangered or extinct? Very good. They become extinct. So now support your answer. Because we cannot see any dodo birds now. The last existing member also died. So they are extinct. Very good. Next, due to entanglement, habitat degradation, noise, chemical contaminants, the number of Indus River dolphin in Pakistan has reduced to 1800 according to 2017 survey. So पाकिस्तान में जो इंडस रिवर डॉल्फिन है 2017 के सर्वे के मुताबिक क्योंकि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है, नॉइज बहुत ज़्यादा है, पानी में का केमिकल कंटामिनेशन हो रही है, इसके अलावा उनका इलीगल शिकार किया जाता है, हंटिंग की जाती है, उनकी इंटेंगलमेंट यानी कि पकड़ लिया जाता है उनको, इसकी वजह से इनका जो काउंट है इट हैज़ रिड्यूस्ड टू 1800 यानी कि अब ये 1800 रह गई हैं. सो आर दे एक्सटिंक्ट और endangered? Of course they are endangered because their count has reduced so much that they are about to extinct. So this is how you will write about both the scenarios. Okay, I hope you have understood it now. Carefully read it and then answer these. For evaluation, we will move towards page number 35. Listening and speaking questions. Question number 17. Name some extinct animals. Dinosaurs, dodo birds, Tasmanian wolf, mammoths, these are all extinct. What is the difference between extinct and endangered animals? Extinct animals no more live on earth. Endangered animals, their count is extremely less, that they are near to extinction. Okay, so this is how you will answer the questions, and we will move forward towards your homework given on page number 35.
This is analysis and interpretation. आपको हर statement के साथ options दिए गए हैं. You have to select the correct option. Let me do the first one for you. Environmental disturbance is due to use of solar energy, tree plantation, release of toxic gases. So environmental disturbance किस वजह से है? ज़्यादा tree plant करने से, solar energy use करने से या toxic gases की वजह से? Of course, C is the correct option, release of toxic gases. So this is how you will complete the rest of the multiple choice questions. Now we will move forward towards the wrap up of the lesson. So my dear students, we should try to save endangered animals before they become extinct like dinosaurs. So हमें जानवरों का ख्याल रखना चाहिए इससे पहले कि वो extinct हो जाए dinosaurs की तरह. So I hope you have now completely understood about extinct animals and endangered animals. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.